Class of our electrochemistry. In this class, we are going to learn about the electrical double layer. Now, what is mean by electrical double layer? Before going towards any this electrical double layer model, we must have to know what is mean by electrical double layer, because we have many models to explain this electrical double layer. And why? Because we are using these models that I'll tell you at the end of the class. But whenever we have this electrical double layer at that time, let me just share with you one slide to represent you or to tell you or to explain you simply electrical double layer. But before that, just wait till I'm loading this slide. So, whatever the electrical double layer is there, this electrical double layer is forming. This electrical double layer is formed by the simply here one metal is there. Listen very, very carefully. I'm going to tell you each and everything in a very, very detailed manner. But before that, you must have to know first thing first, which is related with electrical double layer. What is that? Electrical double layer. So, uh, okay. Am I audible clearly, everyone? Hello? Am I audible, everyone? Hello? Yes, ma'am. Clearly? Oh, Okay. So whatever this electrical double layer is there, this electrical double layer, if you are learning from the literatures, then they can give you this point like simply EDL. What is that, beta? EDL. What is that point? EDL. E, D, and L. So do not confused whenever they are representing EDL. What is mean by EDL? What is it's a long form? Because electrical double layers short form means उनके वर्ड से आई मीन टू से उनकी हेडिंग पर से हमें पता चलता है, उन पर से हम लेते हैं EDL. And whatever this EDL is formed, that EDL formation theory here we are learning, or how it is forming that we are learning, that is nothing but whenever you have your electrode, at that time that electrode is putting you're putting your रफ वर्ड्स में पहले बोलती हूँ और उसके बाद में थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड्स में बोलती हूँ. स्टैंडर्ड वर्ड्स में मतलब क्या, ये जो स्लाइड आप लोगों को दिख रही है वो स्टैंडर्ड वर्ड्स हो गए सीधे सीधे. ओके, बट बिफोर दैट let me clarify with the basics in for EDL. दैट इज, जब कभी भी आपके पास में इलेक्ट्रोड होगा, उस इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में जब आप डिप करते हो, तब क्या होता है, तब क्या होता है कि there is a formation of charges. There is a formation of the charges. And whenever there is a formation of the charges, that formation for the charges, for that purpose, your solution is having specific type of your particles, and that particles are nothing but which is greater than 1 nanometer. And whatever the charge separation is there, that charge separation at the interface of your electrodes is there, that charge separation is there always. Means what? It is always there whenever you are having a charge, whenever you are having that solution and electrode, there is a charge separation. Now you guys might be wondering, ma'am, what do you want to tell us exactly? See, I mean to say, and for the explanation of all these things, for the explanation of all these year, this one year slide that I'm going to use simply, wait a minute, simply one slide to explain you very smoothly and cleanly and neatly. But before that, let me tell you at once, because I want to show you. If I'm just telling you, then you cannot be able to understood to you cannot be able to understand that point. But if you are visualizing that thing, that is why I'm just telling you here. Okay, so see, whatever the last point is there from this electrical double layer, or
we can say that is as ideal. So अब ये जो कुछ भी एक्सेस चार्जेस होते हैं, ये एक्सेस चार्जेस कैसे और कहाँ पर वो अकोमुलेट होते हैं, तो वो अपोजिटली चार्जेस अट्रैक्ट होते हैं. What do I mean by this? I mean to say with this is nothing but EDL is there, which is forming simply with the opposite charges. With the opposite charges. Now, let me share with you one slide before telling you anything. Good. I'm sharing the slide. Wait till then. Correct slide. This is not the correct one slide. This we want, but at the last. Mm. सुनो, यहाँ से पहले समझाती हूँ और बाद में और एक स्लाइड लेती हूँ. देखिए, जब कभी भी हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है, आप लोग थोड़ा सा कोरिलेट करो. लैब में आप गए हो और लैब में आप जाने के बाद में सपोज एक आपने सॉल्यूशन बनाया है. अब आप एसिड ले रहे हो, बेस ले रहे हो या फिर सॉल्ट ले रहे हो, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है. बट अब जब सॉल्यूशन बना रहे हो और उसमें अब आप क्या डाल रहे हो, तो इलेक्ट्रोड डाल रहे हो. क्या कर रहे हो बेटा? इलेक्ट्रोड ऐड कर रहे हो या फिर डिप कर रहे हो. अब इलेक्ट्रोड जब डिप करते हो आप, तब क्या होता है कि आपका जो कुछ भी इलेक्ट्रोड होगा, उस इलेक्ट्रोड का जो कुछ भी मीन्स दैट इलेक्ट्रोड विच यू आर टेकिंग हियर, दैट कैन बी ऑफ पॉजिटिव, that can be of a positive type, sorry, that can be of a positive type, or that can be of a negative end. Positive type and negative type means what? Electrode can be of positive end and electrode can be of negative end. And now when you have these electrodes at that time, guys, जब कभी भी ये electrodes, अरे, why I'm not able to write here anything? हाँ, सो अब ये जो कुछ भी अब इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रोड्स आपके जो कुछ भी होते हैं, तो दे कैन बी ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड. मतलब क्या? कंफ्यूजन मत करो. अभी भी मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो वो भी क्लियर करा देती हूँ. देखिए, जब कभी भी आपके पास में इलेक्ट्रोड्स होंगे, तो ये जो कुछ भी इलेक्ट्रोड होते हैं, वो आपके बैटरी को जब कनेक्ट करते हो आप, तब वो एक आध इलेक्ट्रोड को आप एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लेते हो, दूसरे इलेक्ट्रोड को एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब एक निगेटिव लिया तो दूसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव लिया तो दूसरा निगेटिव लेते हो. मतलब कि क्या? वाइस वर्सा थिंग. मतलब कि देखिए, अब ये आपका इलेक्ट्रोड, सपोज कुछ देर के लिए आपने इसको इसको मतलब ये हेलो, हेलो, am I audible everyone? Yes, ma'am. Yes, yes. Okay, okay. So whatever your electrode is there, if that electrode is negatively charged, and the next electrode is a positively charged electrode, so whenever you have these electrodes, at that time पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड की तरफ कौन से आयन्स अट्रैक्ट होंगे गाइस? नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स. यस और नो, बताओ मुझे. चलो, अरे बाप रे, यू कैन टेल मी इन चैट बॉक्स, नो इश्यूज. देखो, सीधे सीधे अपोजिट अट्रैक्ट, मतलब निगेटिव जहां पर इलेक्ट्रोड होगा, वहां पर कौन से चार्जेस अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड. मतलब इस निगेटिवली चार्ज्ड जो कुछ भी है, ये निगेटिव है, दिख रहे होंगे ना आप लोगों को. तो ये जो कुछ भी इलेक्ट्रोड्स है, तो इनकी तरफ ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स अट्रैक्ट होते हैं. इसके बाद में अब अगर से आप यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड को
जब अगर से आप पॉजिटिवली चार्ज कंसिडर कर रहे हो, तब ये पॉजिटिवली चार्ज मतलब इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा बच्चों? बोलो जल्दी जल्दी, चॅट बॉक्स में बोलो. मठ्ठासारखे बसू नका बरं नुसते मोबाईल लावून, किंवा फिरू नका इकडे तिकडे. आन्सर मी क्विकली. Whatever your this positively charged electrode is there, it will attract to the positively charged ions, right now? Yes, good. So whatever these your electrode is there, towards it, always again I am telling you, it will attract opposite charge. Means what? पॉजिटिव के अपोज में या फिर पॉजिटिव के मतलब कॉन्ट्रास्ट में कौन होगा? Simply the negative charge. Are you guys getting my point? What I want to tell you in this slide is the basic thing is clear to you, how your electrical charges are created. टेल मी बेटा. कारण हा पॉइंट फारच सोपा आहे बरं का. खूप असं डिफिकल्टी लेवल वगैरे नाहीये, पण तुम्ही वाचायला गेलात ना तर तुम्हाला मे बी कळेल नाही कळेल, आय डोंट नो. पण हे समजून सांगत असताना आता जर कळलं, एखाद दोन रिव्हिजन दिल्या की एकदम सोपं होऊन जाणार. हे समजलं असेल तर पटकन मला चॅटबॉक्स मध्ये वाय किंवा एन, एस असेल तर वाय आणि नो असेल तर एन, क्विकली रिप्लाय द्या प्लीज. फास्ट करा थोडंसं, नाही तर मग मी हे सेशन थांबवणार आहे, क्वेश्चन्स विचारणार आहे. कसे क्विक रिप्लाय येतात. गुड, व्हेरी गुड. रोज क्वेश्चन विचारायला पाहिजे. सो okay, so when you have these your electrical double layer means what? Again, to explain this thing, now I'm using one slide, but for that thing, just wait and watch. Till then, I'm loading this slide. Hmm. हाँ, सो अब ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मुझे एक्सप्लेन करना है, पर ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर एक्सप्लेन करने के लिए मैं ले रही हूँ और एक स्लाइड की हेल्प. सो whatever that electrical double layer is there, that electrical double layer can be formed. देखिए, अगर से हम यहाँ पर, अभी मैं ना जूम नहीं कर सकती हूँ ज्यादा, हाँ? तो अभी ये जो कुछ भी हमारे पास में इलेक्ट्रोड है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, तो इसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा रे सॉल्यूशन में से? पॉजिटिवली चार्ज आयोन्स. एंड नाउ व्हेन यू हैव these your electrodes at that time, at that time, simply whatever your electrode is there, that electrode can be of negative, it can be of negatively charged, it can be of positively charged. So अब अगर से आप पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कंसीडर कर रहे हो, तो उसके बाजू में कौन से आयन्स मतलब जमा होंगे बेटा? तो उसके बाजू में निगेटिवली चार्ज आयन्स विल काय म्हणू आपण, दे विल बी added up. Okay, so this is nothing but your electrical double layer. बट अब अगर से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो अब ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मतलब क्या? आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है क्या? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. यस गाइस. वाह, गुड. वाह, nobody. Are you writing in chat box? You can tell me by unmuting yourself. Need not to type that much. कारण तेवढं लिहित बसला तर वेळ लागेल. Accumulation. Wait. Let me check the chat box. There is one answer.
Accumulation of oppositely charged ions on respective electrode from electrolytic solution. Very good. Again, there is answer from Harshada. Electrode one layer solution, another charge layer forms double layer. Kai. Electrode one layer solution. Solution, another charge. No. Harshada, I'm not clear with which electrode. One layer. Very smart, Rajeshri. सेमच क्षितिजा लिहून मोकळी झालीस. लिहा आता सगळेजण सेमच क्षितिजा, नहीं तो मग हर्षदा. चलो, अगर से क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैसे फॉर्म होता है तो आगे के मॉडेल्स ले लू. येस और नो. बरे बघू द्या किती जण राहिले. 25. गुड, व्हेरी गुड, कीप इट अप. अशी स्ट्रेंथ राहू द्या. चलो. Okay, so let me continue with the point. Now, once you're clear with the electrical double layer, then we can have their on the basis of this electrical double layer, we can explain the three models. How many models, guys? Three layers we have. How many models we have? Three layers we have, and which three models we have, and those three models are nothing but very first one model is known as Helmholtz Perrin parallel plate model. Next model is known as Goy-Chapman model. Then the third one model is known as Stern model. Okay, so whatever these models are there, to explain all this, am I audible, everyone? To explain all these models, to explain all these models, we must have to need some slides, and to for that slides, let me just share with you those slides. So, whatever the electrical double layer is there, on this electrical double layer, we have our first one model. And what is that model? It is right in front of you. Helmholtz. Yes. Hello. Hello. Any doubt to anybody? Should I repeat anything? Hello. सो व्हेरी फर्स्ट वन मॉडेल इज नोन ॲज, आपलं कितवं मॉडेल आहे हे? पहिलंच मॉडेल आहे. तर ह्या मॉडेलमध्ये काय सांगणार आहोत आपण? हो, तर दिस इज अ फर्स्ट मॉडल एंड विच इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज पेरिन मॉडल. ओके, तो ये जो कुछ भी अब हेल्महोल्ट्ज मॉडल है, दिस मॉडल हैव बीन पुट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ अस बाय हेल्महोल्ट्ज इन द ईयर 1879. And what this model tells us, this model has been explained on the basis of electrical double layer. And now, whatever the charges for a electrical double layer are there, those charges for specifically Helmholtz model, whatever those charges of your particles of lyophobic colloids due to the unequal distribution of ions at the particle water interface is there, that is formed. मतलब क्या, अब यहाँ पर जो कुछ भी आप सोल्यूट लेते हो, तो वो सोल्यूट आपके सॉल्वेंट में मिक्स करके आप सॉल्यूशन बनाते हो, और वो आप उसमें आप आपका इलेक्ट्रोड डाल रहे हो, तो उस इलेक्ट्रोड का और आपके सॉल्यूशन में जो कुछ भी आयन्स है उनका मिला करके आप लोगों को इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मिलता है, जिसमें से कि अब आप लोगों को इस हेल्महोल्ट्ज हेल्महोल्ट्ज आइडियल मॉडल में या फिर हेल्महोल्ट्ज के मॉडल में आप लोगों के जो कुछ भी पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स विल बी ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड, और दे विल बी ऑफ सिंपली of what we can say, of same charge. Yes, can anybody? Same charges चे असणार ते की वेगवेगळे असणार हो? Opposite charge. Good. So, whatever here this electrical double layer is there, from which we learn about Helmholtz first model, and now whatever this Helmholtz model is there, this Helmholtz model is telling us simply about
the your model about the your solid, how your solid is, how your liquid is. That I'm again sharing with you one slide, and in this slide you can be clear with simply whatever our Helmholtz was. Helmholtz scientist is there. They have he have been told us about this model in the year 1879, and whatever these your electrical properties are there, means in electrical double layer, whatever the electrical properties he have explained, that is completely on the basis of colloids. On the basis of कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? colloids. मतलब कि वो आप लोगों को ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए पूछ सकते हैं, the property of Helmholtz model is explained on the on which concept? तो colloids. It is explained on the basis of colloid. कशाच्या बेसिसवर? कोलॉइडच्या बेसिसवरती ती एक्सप्लेन करण्यात येते. व्हॉट इज मीन बाय कोलॉइड्स? नाउ यू हॅव लर्न दिस कोलॉइड्स in your 12th standard, and then after in BSc first year, second semester, you have learned this your colloids, everything about colloids, their solid particle, there's all the nature properties and the uses, each and everything. Now I'm not going into the much details of the colloids, but यू कॅन से वॉट एव्हर दिस सिंपल वर्ड्स मध्ये सांगते, जे काही कोलॉइड्स आहेत, जो कुछ भी कोलॉइड्स है, तो उनके वो जो कुछ भी सोल्यूट्स होते हैं आपके, तो वो कोलॉइड्स के जो कुछ भी पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स जो कुछ भी होते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में होते हैं. वो हमने बताया था अभी अभी के 1 नैनोमीटर के ज्यादा उनकी क्या रहनी चाहिए थी, मतलब साइज रहनी चाहिए थी. ओके, तो अब ये जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म होता है, तो वो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर किस में फॉर्म होता है? सॉलिड और लिक्विड में. अब ये जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे आप लोगों को जो कुछ भी मॉलिक्यूल्स आप लेते हो, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आप लोगों को उनके इलेक्ट्रिकल चार्ज पर ये सारे मॉडल्स मतलब एक्सप्लेन करते हैं. तो अब ये जो कुछ भी आपके क्या बोलते हैं हम मॉडल्स होते हैं, तो ये मॉडल्स आप लोगों को सिंपली कैसे आप एक्सप्लेन करते हो? तो उनके इंटरफेसेस पर से. नाउ द वर्ड इंटरफेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विच वर्ड बाय गाइस? word interface is very very important. Inter means what? Inter colleges competition बोले तो क्या? इंटर कॉलेजेस कंपटीशन मतलब कि जैसे कि दो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में अगर से कंपटीशन हो रही, तो उसको हम बोलते हैं इंटर कॉलेजेस कंपटीशन. यस और नो गाइस? तो इंटरफेस मतलब क्या? दो अलग अलग फेस है इसमें. अब आप लोग एक रूम में बैठे होंगे, तो एक भिंत आणि दुसरी भिंत, म्हणजे जाऊन डोकं आपटू नका त्याच्यावर, पण मला काय सांगायचं ते लक्षात घ्या. एक वॉल और दूसरी एक वॉल, अब ये दोनों वॉल्स में जो कुछ भी कनेक्शन होगा, तो मतलब कि इन दोनों का जो कुछ भी मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इंटरसेक्शन होगा. इंटरसेक्शन मतलब दोनों जहां पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरफेस. मतलब एक हाथ दूसरे हाथ पे रख दो, मतलब सीधे हाथ नहीं, एक हाथ हॉरिजॉन्टली और एक हाथ वर्टिकली, तो क्या होता है? आपके ये दोनों हाथ मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट फेसेस. आप लोग बोलोगे मैम इतना क्यों आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो, या फिर इतना क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे आप लोगों को इमेजिन करवाना है, क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना है कि हाउ दैट दोज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैन बी फॉर्म. दो I told you electrical double layer is formed between your electrode and your solution, but some students are not able to imagine, some students are not able to understand to this my point, and that's why I told you all these things. Now you guys please tell me, are you clear how that interface is formed? Interface is nothing but सिंपली दो अलग अलग चीजों में जो इंटरेक्शन होगा, मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड. अब सीधे सीधे आप लोग लैब में जब आप लोग लेते थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फॉर एग्जांपल कंडक्टोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट आप लोग जब करते हो लैब में, तब क्या होता है कि आपका वो जो कंडक्टोमेट्रिक इलेक्ट्रोड होता है, उसको आप डिप करते हो आपके सॉल्यूशन वाले ये सॉल्यूशन सॉरी बीकर के साथ, जिसमें आपका सॉल्यूशन है. तो अब इसमें जब आप ऐसे मिक्स कराते हो, तब क्या होता है? तब
दूसरा तीसरा कुछ नहीं, तो उसमें चार्जेस क्रिएशन होता है। अब ये जो कुछ भी चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, तो ये चार्जेस आप लोगों को एक डबल लेयर फॉर्म कराते हैं। डबल लेयर मतलब क्या? ये पॉजिटिव समझो, इलेक्ट्रोड अगर से पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, और आपके सॉल्यूशन में से निगेटिवली चार्ज आयन अट्रैक्ट होंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एंड बट नाउ हियर वी आर लर्निंग about the Helmholtz model, and in this model we are learning about the charges particles. Whatever these charged particles are there, these charged particles can be of type solid or liquid. And now whatever this your surface chemistry about your Helmholtz model is here, it is dependent on to the colloids, as I told you already. Helmholtz model is dependent on to the कोणतं मॉडेल किंवा कोणाच्या प्रॉपर्टी वरती? कोलॉइडल जी काही त्याची स्टेट आहे किंवा कोलॉइड प्रॉपर्टी, कोणत्या प्रॉपर्टी वरती सांगू शकतो आपण? किस प्रॉपर्टी पे बोल सकते हम? कोलॉइड्स प्रॉपर्टी पे. is that इलेक्ट्रिकल डबल लेयर आहे ना मॅम? uh, कोलाइड्स म्हणजे ते हेल्महोल्ट्झने एक्सप्लेन केलं क्वालिटेटिव्हली द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स ऑन द कन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर आहे ना? सॉरी एक मिनिट, आता बोल. मी ऐकलंच नाही, शिंक आली होती. आता बोल, काय म्हणाला साहेब? ते कोलाइड्स अबाउट काय म्हणल्या तुम्ही एक वेळ सांगाल का? हाँ श्योर. सी, ये जो कुछ भी हेल्महोल्ट्ज मॉडेल है ना, दिस हेल्महोल्ट्ज मॉडेल इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ युअर कोलॉइड्स. म्हणजे काय? जे तुम्ही सॉल्युशन घेता की नाही, मराठीत सांगू ना? हो सांगतो चालतं. हां, तर हे जे काही आपले सोल्युशन असतं ना, तर त्या सोल्युशनमध्ये जे सोल्यूट आपण ॲड करतो की नाही, तर ते सोल्यूटचं जे काही प्रॉपर्टीज आहेत, तर ते सोल्यूट म्हणजे कोणत्या नेचरचं घेणार तुम्ही? तर कोलॉइड्स टाइपचे घेणार. मग आता हे जे काही तुमचे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज असणार आहेत, म्हणजे काय, जे कोलॉइड्स आहेत की नाही तुमचे, त्या कोलॉइड्सच्या ज्या काही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज असणार आहेत, त्या ऑल द प्रॉपर्टीज यू कॅन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डबल लेयर. म्हणजे काय? मग आता ते इलेक्ट्रोड आहे तुमचं, सॉरी मी पेन घ्यायची तर इरेजर घेतलं. तर हे जे काही आता समजा तुमचा इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, ओके ना, आणि मग त्यावरती कोणता दुसरा चार्ज येणार बेटा? निगेटिव्हली चार्ज आयॉन्स विल बी दिया, म्हणजे अक्युमुलेट होणार. मला सांगा आता हे लेअर कसा बनला? सिंगल लेअर आहे का डबल लेअर आहे? म्हणजे हे पॉझिटिव्ह इज वन लेअर अँड निगेटिव्ह इज अनदर लेअर, अँड दिस कॅन बी कॉल्ड ॲज डबल लेअर. कोणाचा डबल लेअर? इलेक्ट्रिकल डबल लेअर. ओके or not? Clear or not? Yes. Clear beta? Yes ma'am. To everyone, please tell me in chat box. नाही तर मी वन वे इंटरेक्शन काही कामाचं नाही. चलो, अगर से क्लियर हो गया होगा, तो अब ये जो कुछ भी आपका ये हेल्महोल्ट्ज मॉडल है, तो ये मॉडल सॉरी ये मॉडल आप लोग बता सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस. एनी मॉडल, हाँ, मतलब कि इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस. बट चार्जेस से कैसे? तो चार्जेस की डेंसिटी कैसी होती है उस पर हम बताते हैं. तो अब और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक एक हेल्महोल्ट्ज मॉडल का एक डायग्राम आप लोगों को बताती हूँ. जस्ट वेट टिल आई एम लोडिंग दिस स्लाइड. पारे हे बघा, अजून एकदा बघा, अजून वेगळ्या स्लाइड मध्ये बघा. So, whatever this Helmholtz model is there, this Helmholtz model has explained the charge separation on कसे इंटरफेस वरती, कसे मेटॅलिक इलेक्ट्रोलाइट. जसं मी तुम्हाला आता सगळी बडबड केली तीच आहे का बघा बरं तुमच्या समोर. दिस Helmholtz have explained or he has described that the charge separation at the interface.
सॉरी, द चार्ज सेपरेशन एट द इंटरफेस और बिटवीन काय काय इंटरफेस मतलब क्या, अब यहाँ पर इंटरफेस कौन कौन होगा, इलेक्ट्रोड एंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, मतलब बीकर कंटेनिंग सॉल्यूशन एंड देन आफ्टर इन दैट वी आर प्लेसिंग आवर इलेक्ट्रोड। सो ये एक आपका हो गया इंटरफेस का ये एक मतलब एंटिटी, और दूसरी ये एक एंटिटी हो गई। अब ये जो कुछ भी चार्जेस है, तो ये चार्जेस, ये जो कुछ भी आपके चार्जेस होते हैं, तो आपके मेटल पर ये जो कुछ भी, वो समझ लो अब यहाँ पर अगर आप पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कंसिडर कर रहे हो, तो उस पर कौन से चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, थोड़ा सा मैं ना जूम करके बताती हूँ, हाँ आप लोगों को, वेट करो। काय ताप आहे, बरं इथं दिसत नाहीये, पण थोडस ट्राय करा, दिसतंय का बघा, थोडं तुम्ही झूम करून बघा, तुमच्या मोबाईलवर झूम करता येत असतं तुम्हाला माझे स्लाइड, प्लीज ट्राय टू झूम युअर सेल्फ, कारण ना इकडनं होत नाहीये माझ्याकडनं, मॅडम झूम हे करता मॅम येतं. झूम होतंय. येतंय ना? होतंय मॅम झूम. हा, तुमचं तुम्ही करून बघा. तर आता हे जे काही होतंय की नाही होतंय, होत आहे होतंय मॅडम. होतंय. करून बघा ना बेटा प्लीज, कारण माझ्या इकडनं मी ट्राय करते तो होत नाहीये. हा, तर आता हा जो काही तुमचा पॉझिटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोड आहे की नाही, मग मला सांगा ह्याच्याची कोण येणार, निगेटिव्हली चार्ज आयॉन्स अक्युमुलेट होणार इकडे की पॉझिटिव्हली चार्ज आयॉन्स होणार? इतका वेळ मी जी बडबड केली ती समजली का, आता कळेल मला, सांगा बरं. हे पॉझिटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोड जर आपण कन्सिडर केला, तर याच्याशी म्हणजे कनेक्टेड निगेटिव्हली चार्ज आयॉन्स जमा होणार की पॉझिटिव्हली चार्ज आयॉन्स? येस, आय एम वेटिंग फॉर युअर रिप्लायज. निगेटिव्हली चार्ज. सॉरी, निगेटिव्हली चार्ज. सैयद तू पण निगेटिव्हलीच बोललास का? हो मॅम. Good. So, whatever these negatively charged ions are there, now these every ion is getting hydrated. See, I'm telling you each and everything very, very slowly and stepwise. Why? Because if I'm telling you everything very fastly, then you might be getting confused. That is why now और एक पॉइंट बढ़ा रही हूँ इस स्लाइड में मैं, तो क्या बढ़ा रही हूँ बेटा, तो ये जो कुछ भी निगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, तो दोज आर गेटिंग हाइड्रेटेड, दोज आर हाउ दोज आर हायड्रेटेड, अँड व्हॉट एव्हर दिस हायड्रेटेड म्हणजे काय रे, त्यांच्यामध्ये कोणाचा कंटेंट असतो, इन इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ॲज यू नो व्हेरी वेल, if a complex is there and with that complex, if that complex is mentioned as a hydrated complex किंवा एखादा कंपाऊंड आहे, it is hydrated compound, means what, in that molecule some water molecules are there, that might be 1 2 3 4 10 20 100,000, किती पण मॉलिक्युल्स असू द्या, मी फक्त एक्झाम्पल साठी 10 100,000 असं उगच फ्लो मध्ये बोलले बरं का, तेवढे नसतात, 10 15 असं वगैरे. तर whatever the number is, whatever the figure is, but what I mean to tell you, what I mean to एक्सप्लेन सिंपली, आपका जो कुछ भी आयन होगा, रुको, ये आपका जो कुछ भी आयन होगा, वो अगर से पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन भी होगा, तो उसके सराउंडिंग में कौन होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे एक आयन के सराउंडिंग में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल से वो सराउंड होते हैं बेटा, और वो सब कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये सब कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड ये बताने के लिए मुझे आप परमिशन दो एक स्लाइड लोड करने की. इज दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी यस और नो. नाही? छान, समजलं की नाही रे? यस मॅम. व्हेरी गुड. चलो, अच्छी बात आहे. तुम्ही उत्तर दिलं नाही ना, मला वाटते नाहीच समजलं, त्याच्यामुळे पटकन तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये टाकून त्याचं आन्सर तुमचं. हा, तर 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 तुम्हाला एक्सप्लेन करण्यासाठी मी अजून एक स्लाइड घेतेय, आणि ती स्लाइड म्हणजे, यस, इट इज राईट इन फ्रंट ऑफ यू. या, नाउ लुक टुवर्ड्स दिस स्लाइड व्हेरी स्मूथली अँड सायलेंटली and read this carefully, huh?
मी एक्सप्लेन करते, पण मला असं अपेक्षा आहे की तुम्ही अगोदर बघावं. कारण मी सगळं एक्सप्लेन केलेलं तुम्हाला इथे मिळेल आणि त्यानंतर मी अजून एकदा एक्सप्लेन करते. नो इश्यूज. Azra, why are you leaving the meeting and joining again? हा श्री, काय प्रॉब्लेम आहे विचार. श्री, काय डाऊट आहे विचार. अनम्यूट केला होतास. झाली का रे स्लाइड वाचून झाली? क्लिअर झाली का सांगा बरं मला, म्हणजे मला कळेल किती एक्सप्लेन करायचं. हो पण नाही, पण काहीच सांगत नाही. कसे लेकर आहेत नक्की. ती बिचारी टाईप करत राहते. पीत तुझ्या तर कसं व्हायलं तुला? दत्ता, लेट जॉईन केलास का मीटिंग? काय नाही समजलं, अनम्यूट करून सांग मला. काय नाही समजलं सांग पटकन सर. डाऊट्स नाहीच ठेवायचे डोक्यात. क्विकली टेल मी. डिफरन्स ऑफ पोटेन्शियल ते काय मॅम? हा ते सांगते. डोंट यू वरी अबाउट इट. आय टेल यू. पहिला पॉइंट वाचा फक्त, दुसरा बऱ्याच जणांना कन्फ्युज होईल मे बी. पहिलं समजलं का रे? बाकी सगळं डायग्राम हे ते तामलवाड, दत्ता हो मॅम. तामलवाड क्लिअर? हो मॅम, हो मॅम. शुअर? हो. तर नाही म्हणून मेसेज टाकायला की भीती वाटते की रे मला. थोडं म्हणलो मॅम, ते डायपोल मध्ये काय आले ते समजलं नाही, म्हणजे न्यू कन्सेप्ट आहे काय ते? काय न्यू नाही सांगते, सोपच आहे. फक्त एक्सप्लेन कसं करतात बघायचं. उगी येडं बनवतात रे. ओके मॅम. चला, लेट मी कंटिन्यू गाईज. येस, सो तर त्याला थोडं कन्फ्युजन आहे. एक आता कोणाचा तरी मेसेज आला, तो मला दिसला नाही बरं. तर काही डाऊट असेल तर पुन्हा अनम्यूट करून विचारा. तर मेटल, when you have a metal and now this metal you are considering it is behaving as a negative. See guys, तुमच्यापैकी काही जण म्हणत असतील, मॅडम वेडे झालेत का आज? मॅडम एकदा मेटलला निगेटिव्ह म्हणतायत आणि एकदा पॉझिटिव्ह. पण मी क्लास सुरू करतानाच अगोदर तुम्हाला क्लिअर केलं, युअर इलेक्ट्रोड कॅन बी पॉझिटिव्ह और इट कॅन बी अ निगेटिव्ह. हाऊ इट इज कनेक्टेड टू द बॅटरी और हाऊ इट इज कनेक्टेड टू द सर्किट, ऑन दॅट बेसिस युअर इलेक्ट्रोड्स नेचर कॅन बी एक्सप्लेन. Are you clear, everyone? Please tell me by unmuting, because now I want shout out from you, your side. क्लिअर मॅम. बाकीचे कुठे गेले? मोबाईल लावून फिरायले काय? Yes, ma'am. Clear. शुअर? दोघांना क्लिअर झालं फक्त क्लासमध्ये? Is that clear to only 2 students? Yes guys, I'm not able to see now chat box, huh? Okay, हाँ ठीक है, क्लियर नहीं आ रही तो कोई नहीं. Yeah, I can understand. You can watch this class recorded session. Okay. दिसतंय मला चॅट बॉक्स. हा, सो
Okay, so now again coming back to the point, and what is that? If you are considering this is as electrode and which is nothing but a negative. So once you are clear with this metal is nothing but a electrode, which is the negatively charged, and now towards this electrode you are having the simply and simply positively charged ions असणार आहेत की negatively charged ions असणार आहेत तो तर obviously positively charged ions are there, and now these positively charged ions are represented like Me plus. Like what beta? Me means metal. Me means from metal, and it is plus, or Me n plus n means what? उसके सिर पे plus n मतलब it is nothing but the cation. It cation, how cation is formed? By the loss of electrons. मतलब ये positively charged और ये कैसे negatively charged. So opposite attracts छोड़ दो, ऐसे opposite attracts भी आपको थ्योरी में लिखना नहीं है, मुझे बोलना क्या मॅम आवाज येत नाही. hello, am I audible everyone? Hello, hello, आवाज येतो माझा मॅडम. आवाज काहीतरी अशी नोटिफिकेशन आली होती मला की वेबएक्स काय नेटवर्क गेलं होतं वगैरे, आय डोंट नो वाय इट इज सो. लाईट मे बी गेली आहे बहुतेक माझ्याकडे, हा लाईट गेली रे, त्याच्यामुळे वायफाय हे झालं होतं डिस्कनेक्ट. ओके, आय एम ऑन माय डेटा, मोबाईल डेटा. सो एम आय ऑडिबल क्लिअरली? सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस एवरीवन. येस मॅम क्लिअर. ओके, चलो अब ये जो कुछ भी बड़बड़ मैंने की अब तक वो क्लियर है क्या? वो वाटर मॉलिक्यूल वो सॉल्वेटेड होता है एंड ऑल क्लियर?
हाँ, तो अब उसके बाजू में मुझे तमिलवाड़ ने क्वेश्चन किया कि मैम उसके बाजू में और कुछ तो आयन दिया है और डायपोल लिखा है. आता तमिलवाड़ मुझे मुझे बता तू सिम्पली वेट तुला विचारण्याच्या नादात व्हाईट बोर्ड राहिला शेअर करायचा. तर हे जे काही डायपोल आहे त्याचा क्वेश्चन आहे मॅडम डायपोल म्हणजे काय. डाय मीन्स टू, पोल मीन्स काय रे, दोन पोल. डाय मीन्स दोन पोल म्हणजे पोल. कोणते पोल, साऊथ पोल, नॉर्थ पोल. Now here we don't want south pole north pole because we are not learning magnetic chemistry. Here we want konte pole, plus pole minus pole. Now which plus pole, which minus pole? Plus pole means, sorry, plus pole means what? Plus pole mean negative and the positive means what? Water is having H plus and OH minus ion. And what ions are there? These ions will have simply the capability to have or to connect it towards to H plus will be connected or it will be attracted towards when it is getting dissociate at that time it will be attracted towards negative charges and this will be attracting towards the positively charged ions, and that is why you can have the accumulation of your charges, accumulation of your one चार्ज एंड उसके बाजू में आपके H2O और उसके बाजू में और आपके ऐसे ही होती है आपके सॉल्यूशन की केमिस्ट्री. क्या होती है बेटा, ऐसे ही होती है आपके सॉल्यूशन की केमिस्ट्री. एंड इस पर से हम बता सकते हैं हमारे जो कुछ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है, अब ये इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में, इस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में हमारा पोल हमें ऐसे लिए था. हमने अभी अभी कुछ देर पहले हमारा पोल लिया था एज एंड उसके बाजू में कौन से आयंस जमा हुए थे, कैटायंस, जो डायग्राम मैंने दिखाई थी. उसके बाजू में डायपोल थे. क्या है बेटा, डायपोल्स. डायपोल्स किस के हैं, सॉरी अब अच्छे से लिखना चाहती हूँ पर उंगलियों से आ नहीं रहा है तो थोड़ी साइज कम करती हूँ पेन की. अब H2O जो है तो वो H2O पर एक नेगेटिव पोल होता है और पॉजिटिव पोल होता है. अब इस पॉजिटिव नेगेटिवली पोल विल अट्रैक्ट towards the positively charged cation and positive will attract towards बेटा negatively charged. मतलब फिर से ऑपोजिट होंगे बट ये सब कुछ होगा और ये जब और जहां यहाँ पर भी हो रहा है तब यहाँ मुझे कौन लेयर फॉर्म हो, which layer is here, yes, do you know this layer is electrical double layer, yes or no. अरे बापरे, एवढं 1 तास बोलून समजत नसेल तर मग माझ्या शिकवण्याला काही अर्थ नाही. अँड येस ऑर नो. बर, त्याला एकट्याला शिकवते का रे मी. बस एवढेच, छान. बाकी फिरा मोबाईल लावून. वेबएक्सला अटेंडन्स होते ना रेकॉर्ड, त्याच्यामुळे मोबाईल लावायचे आणि जायचं फिरून. So now whatever these charge densities, as I told you, in this Helmholtz parallel plate model, or you can say in Helmholtz model, whatever this model is there, this model is explaining us the charge whatever those charges are there which are forming here, QM, that is nothing but the metal पर जो कुछ भी चार्ज प्रोड्यूस होगा वो चार्ज हम देते हैं Q मतलब चार्ज, तो Q एंड M मतलब मेटल पे जो चार्ज होता है that is equals to QM is equals to the QM is equals to minus of QS मतलब सॉल्यूशन पे जो कुछ भी चार्ज होगा वो, and that will be equals to the minus of QOHE. Now you some students will students may ask you, ma'am, what is mean by that Q and you written something like OHE. So Daromat, it is outermost Helmholtz electrical double layer. O means outermost and IHE असलं तर तिथे innermost Helmholtz electrical double layer. And what is that value and what is mean by these Q values? Q values are nothing but the charges. And one question was asked by Datta, and that is nothing but simply you asked me, ma'am, what is that equilibrium and what is that electrode potential. So to explain that point, I'm taking your permission to load
load that slide. Wait a minute to explain you. Just wait till I'm loading the slide. कुठं गेली slide? So, are you clear with this slide? Please tell me. मी जे सर्कल म्हणजे बॉक्स काढणार आहे मी असा हे कर झालं का सांगा इथं थांबा इथपर्यंत क्लिअर झालं का ते सांगा बॉक्स पर्यंत एव्हरीवन प्लीज टेल मी आय एम वेटिंग फॉर युअर रिप्लायज इफ यू आर गेटिंग देन ओनली इट्स गुड फॉर मी ओके 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 ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया है ऐसा एक्टिव स्टूडेंट्स पर से मैं कंसिडर करती हूँ तो अब at the equilibrium the potential difference is becoming a constant value and that is called as the electrode potential of the metal. At the equilibrium means what? Equilibrium is the condition where your product and your where your product and where your reactant when your product and a reactant is having जेव्हा रिएक्टंट आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन सेम असतं तेव्हा त्या कंडिशनला आपण कायनेटिक्स तेव्हा आपण केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये त्या कंडिशनला ऍज here the equilibrium can be seized. Equilibrium can be occurred when you have your electrode and when you have your those cations or anions at that time whatever this first layer and this second layer is there in these whatever the equilibrium with these electro whatever these ions are there these ions can become at equilibrium they can be at equilibrium when they can be when you have the potential एट इक्विलिब्रियम मतलब क्या ये जो कुछ भी आयंस होते हैं वो आयंस पॉजिटिव जितने हैं उतने ही अगर नेगेटिव चार्जेस आ रहे तो वो आर इन इक्विलिब्रियम दोज आयंस आर इन इक्विलिब्रियम एंड जो कुछ भी अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा यहाँ पर तो वो जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो एक स्पेसिफिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा एक स्पेसिफिक अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा एंड उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल मतलब क्या अब जब यहाँ पर आपके मेटल को हम एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड ले रहे कैटायंस जमा हो रहे अगर से ये सेम हो गए तो इस जो कुछ भी अब ये कि एक पोटेंशियल क्रिएट होता है यहाँ पर ये जब होता है तब यहाँ पर इस पोटेंशियल डिफरेंस को जब वो क्रिएट होता है तब उस कांस्टेंट वैल्यू को जो कुछ भी क्रिएट होती है उस कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल इस मेटल का वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया है और इस तरीके से हम एक आध मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं और अब यहाँ पर खत्म होता है हमारा एक मॉडल जिसे कि हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज मॉडल कौन सा मॉडल बेटा हेल्महोल्ट्ज मॉडल एंड again we have two more models which are like Coy-Chapman model and Stern model. What are those that I'll tell you, but before that are you guys clear up to this? Yes or no? मॅम हा. कोलायडल प्रॉपर्टीज कशा डिटरमाइन करायच्या मग आपण अरे कोलायडल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन नाही करायच्या ते कोलायडल इलेक्ट्रोड जे काही असतं ना आपलं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपण डिटरमाइन करू शकतो किंवा सांगू शकतो त्या कोलाइड्स वरनं तर कशा सांगू शकतो तर तुमचं जे काही सोल्यूट तुम्ही घेता की नाही म्हणजे सोल्यूशन बनवायचे फॉर एग्जांपल मतलब कि आप लोगों को सोल्यूशन बनाना है लैब में और आप लोग इसको कनेक्ट कर रहे हो इलेक्ट्रोड से और तब क्या होता है कि कौन से टाइप के आप सोल्यूट्स ले रहे हो सॉरी एम आई ऑडिबल एवरीवन येस मॅम हा तर हे जे काही तुमचे सॉल्युट्स असतात की नाही त्यांची जी काही म्हणजे टाइप्स असतात की नाही सेल जो सॉरी टंग स्लिप झाली जे काही टाइप्स असतात की नाही तुमच्या सोल्यूटचे तर त्या सोल्यूटच्या टाइप पैकी कोलायडल प्रकारचे तुम्ही इथे तुमचे पार्टिकल्स वापरत असता तुमच्या ह्या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करण्यासाठी आता कळलं का सांग मला
हे होतं ते पॉइंट. मॅम त्या कोलायडल जे सबस्टन्स घेतो ना आपण, तर त्याच्यात इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे नेमकं हेच का फक्त? अगं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी म्हणजे काय बेटा, इथे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी म्हणजे तुझा हा मेटल आहे, राईट बेटा. हा मेटल आहे, तो त्याला काय करतेस तू, सर्किटला कनेक्ट करतेस. सर्किटला म्हणजे एका कनेक्शनला कनेक्ट करतेस. तर तो मेटल आहे आणि त्या मेटलचं नेचर कसं आहे, निगेटिव्ह. थांब थोडं क्लिअर स्लाइड करून सांगते तुला. हा, तर हे आता निगेटिव्हली चार्ज आहे. मग आता मला सांग, तुझ्या सोल्यूट पार्टिकल मध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कोणतेही आयन्स असू शकतात ना. तर त्यापैकी त्याच्यातले स्पेसिफिक कोणते येणार इकडे, तर इकडे निगेटिव्ह असल्यामुळे मेटलवरती, मेटल म्हणजे इलेक्ट्रोड आहे इथं. मेटल म्हटलं की मग मेटल पॉझिटिव्ह असतो, मग मॅडमनी निगेटिव्ह घेतलं का. हे ज्यांच्या लक्षात येत नाहीये त्यांनी सुरुवातीपासून बघायची मीटिंग, हे जेव्हा तुम्ही रेकॉर्डेड सेशन बघणार. तर आता हा जो मेटल आहे ना बेटा, तर हे कोणता इलेक्ट्रोड कन्सिडर करतोय आपण ऍज निगेटिव्ह. हो की नाही, हो की नाही. हो मॅम. हा, आणि मग त्याच्या बाजूला तुमचे कॅटॅयन्स जमा होणार का, कारण अपोजिटली चार्ज आयोन्स एकमेकाजवळ स्टेबल होऊ शकतात, तरच तुमचा हा सो कॉल्ड तुमचा इलेक्ट्रिकल डबल लेअर फॉर्म होणार. हो की नाही, हे असा. मॅम. आणि ह्या लेअरला आपण बघ इथे दिसतंय तुला, फर्स्ट लेअर म्हणतो. हो की नाही. हो मॅम. हा, तसंच मग आता तुला अजून एक दाखवायचं असेल मला, तर पॉझिटिव्हली चार्ज तुमचा हा जो काही आयन आहे, इथेच ह्याच्या पॉझिटिव्हली चार्ज आयन जवळ ऍनियन येऊन टेकले की नाही तुमच्या वॉटरच्या असतात. हो की नाही. आणि इथंच तुमचं याला तुम्ही म्हणू शकता, दाखवू शकता की सेकंड लेअर फॉर्म झाला. अशीच नंबर ऑफ लेअर्स कॅन बी फॉर्म. येस मॅम, तुला क्लिअर. तुझं clear झालं बेटा. येस मॅम. बर, ठीक आहे. नक्की उगीच हो म्हणू नको. नक्की मॅम. चलो, good. And in some literature you may found one equation, and that equation is like, which I'm writing on to this slide by red pen. That is, ये जो कुछ भी आपके क्यू मतलब चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस और उसके साथ में आपका एक सी, सी मतलब क्या बताती हूँ. हाँ रुको, सब कुछ बताती हूँ. सी that equals to epsilon. खूपच घाण लिहिते मी. C is equals to, थोडस समजून घ्या आता, epsilon upon 4 pi d, and E is equals to 4 pi d upon epsilon. That E is and this is equals to QM, मतलब आपका जो कुछ भी मेटल इलेक्ट्रोड है उस पर जो कुछ भी चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो वो चार्ज का एक्सप्लेनेशन आपको दिया, एंड दैट इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू 4 pi d upon epsilon, and that can be nothing into a QM. मतलब क्या, it is nothing but a QM. And what is mean by QM बेटा, QM is nothing but the charge of your metal electrode. कळलं का. हे एक्स्ट्रा नॉलेज साठी होतं, ह्याची ऍज सच तुम्हाला गरज नाही. If you are clear with Helmholtz model, then please tell me in chat box by typing yes or no, because I'm done from my side for the explanation of Helmholtz model. Let me check at once in my slide folder, is there is left anything. काही एक राहिलं नाही पाहिजे माझ्या साईडने. डबल लेअर झाला. हा हा हा, ही स्लाइड सांगावं लागेल एकदा अजून. हेल्महोल्ट्ज बर, हे पण सांगून देते. चलो, जवळपास तर झाले. हे 2 स्लाइड राहिले फक्त. चलो, 2 स्लाइड राहिले तरी माझ्याकडून, ते सांगते. सी, इलेक्ट्रिकल डबल लेअर मी सांगितलेलं आहे, पण तरी तुम्हाला एकदा सांगणं माझं काम आहे. हा, म्हणून सांगते. इलेक्ट्रिकल डबल लेअर फॉर्म होतो कसा बेटा, आताच जसं मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं बघा. काय एक्सप्लेन केलं, हे तुमचा निगेटिव्हली चार्जड मेटलचा इलेक्ट्रोड म्हटलं, तर ह्याच्या बाजूला हे आयॉन्स जमा होत आहेत. हे कोणते असणार, निगेटिव्हली चार्ज. पण त्याच्या बाजूला की नाही, हे ह्याला म्हणायचं इनर IHP म्हणायचं. काय म्हणायचं रे, ह्या लेअरला
आता इथे लिहिते मी थांबा थोडं टेक्स्ट घेऊन देते. आता ना ते कॅपिटल असतंय पण मी आता ना स्मॉल लिहिते तर प्लीज समजून घ्या बेटा. हे IHP म्हणजे काय तर दुसरं तिसरं काही नसून हा पहिला लेअर. हे दिसतंय ना तुम्हाला या निगेटिव्हच्या नंतर जो जमा झालेला गोल 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 राऊंड 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 दिसतायत ना जे जमा झाले अक्युमुलेट हो गए है वो इज नथिंग बट इनर हेल्मोल्ट्ज पेरिन मॉडेल लेअर. ओके किंवा तुम्ही त्याला हेल्मोल्ट्ज IHP किंवा OHP म्हणू शकता. इट्स लॉंग फॉर्म इज आय म्हणजे इंटरनल किंवा इनर आणि तुमचा O म्हणजे आउटर मोस्ट. तर आउटर मोस्ट हा काय आहे बेटा आता हा म्हणजे ना हे गोल गोल म्हणजे तुमचे वॉटर मॉलिक्युल्स असू शकतात त्यामध्ये तुमचा एक एक आयन आणि तुमचा काय त्याच्यामध्ये बेटा एक एक आयन म्हणजेच काय हे जे काही आहेत तुमचे बाहेरचे हे आर नथिंग बट द सॉल्व्हंट मॉलिक्युल्स. सॉल्व्हंट म्हणजे काय कशात सोल्युशन बनवलं होतं पाण्यातच बनवलं होतं की नाही सोल्युशन. सो दोज आर नथिंग बट द वॉटर मॉलिक्युल्स अँड नाव you can have the positive and the negative ions. So positive ions are those which are denoted इथे बघा इथे दाखवलंय बघा आपल्याला तर काय येते positive ions are those which are these like surrounded to the ion as I told you in this class only. And what is that आपका कोई भी आयन हो वो ऐसा भेदभाव करतो का तो की मला पॉझिटिव्ह आवडतो मला निगेटिव्ह आवडतो असं काही नसतं ऍक्च्युली. तर पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्हली चार्जड आयन्स आर दोज who are surrounded by the your water molecules आणि वॉटर मॉलिक्युल्स नी हे सराउंड झालेत तर याला इथे वॉटर मॉलिक्युल मधला ऑब्व्हियसली पॉझिटिव्हली चार्जड आयन इथे येणार आणि तो इथे जमा होणार. लक्षात येतंय का. अँड दिस इज नथिंग बट दी surface charge explanation of your Helmholtz model. आता मला सांगा आर यू क्लिअर बिकॉज आय एम डन विथ दिस स्लाइड. येस क्लिअर ऑर नॉट सो दॅट आय कॅन शेअर यू द लास्ट वन स्लाइड. हो की नाही सांगा पटापट. खूपच बोलायला लावलं बाबा आज. शिट रॉंग फोल्डर. थँक गॉड. हा आले का रे. मी आत्ताच काय म्हटलं होतं तुम्हाला आहात ना. So if you have your metal electrode as a negative like here then this is a compact layer. Compact layer means where you have now that water molecule and from that water molecule you can have the positively charged ions here and negatively charged ions here and to that you have this positively charged हे layer you can have there and positively charged layers. त्याच्यानंतर मग आता इथं diffuse layer सुरू होतो. what is mean by this diffuse layer कोणी निगेटिव्ह असतो कोणी पॉझिटिव्ह कोणी निगेटिव्ह कोणी पॉझिटिव्ह न आता त्याला तितकंसं काही बांधिलकी नाहीये. मीन्स देर इज नो मोर म्हणजे तितकीशी बाइंडिंग नाहीये आता तिथे का कारण ती बाइंडिंग जास्त करून वो बाइंडिंग ज्यादा करके आपके वो सर्किट के आपके वो इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में ज्यादा होगी. बाद में डिफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. डिफ्यूजन मतलब क्या बेटा तो वो सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे बोलना है तो एक बार मुझे क्लियर करने दो स्लाइड. तो अगर सिंपल वर्ड्स में मुझे बोलना है डिफ्यूजन लेयर मतलब क्या तो डिफ्यूज लेयर मतलब सिंपली वहां पर पॉजिटिव के कुछ आयन्स और कुछ आयन्स निगेटिव के हो सकते हैं. अब ये बताने के लिए मैंने अभी अभी आपको बोला था कि IHP मतलब IHP बोलो या फिर IHE बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं. IHP मतलब इनर हेल्महोल्ट्ज पेरिन लेयर ये है और आउटर ये है. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था जस्ट उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अभी दिखा रही हूँ. यस आर यू गाइस क्लियर और नॉट. नाउ ये आप लोगों को एक सिंपल एक डेटा रिप्रेजेंट किया है नथिंग मच. अब ये क्या है तो आप लोगों का इनर पेरिन लेयर जो इनर हेल्महोल्ट्ज प्लेन जो कुछ भी है तो वो उसको x1 लिया है और वो उसका जो कुछ भी वेरिएशन है वो वेरिएशन आप लोगों को क्यूब फाई के हेल्प से एक्सप्लेन किया है. और फिर x2 यहाँ पर जो दिया है तो वो उस पर से आपको आउटर मोस्ट जो लेयर है उसका या फिर आउटर हेल्महोल्ट्ज प्लेन जो कुछ भी है तो वो एक्सप्लेन किया है.
Are you clear, guys? Tell me. If you are clear, then this class for your Helmholtz parent layer is over from my side. Yes. Clear or not? I'm waiting for your replies in chat box. Clear?